Madam, please wait for moments. I will introduce the Sure, new. sure, Yes, yes. sure. Do we start, sir? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. You can start now. So, very good evening to you all. Before to commence the session, on the occasion of Indian Constitution Day, I wish you all the best to all dear participants. Shri Kumarswami Mahavidyalaya, Ausa, District Latur in Maharashtra State is organized World Record Series 2. Today there is 265th day of the series, and the resource person for the today's session on the dais, Honorable Kirti Vijaya ma'am. So first of all, I welcome to you, madam. I welcome the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bedkar sir. I welcome faculty members of my college. On screen, my dear friend Sonu Kumar sir, Deepak sir, and all those dear participants. The topic for today's presentation is Canonization of Sexual Offence against Women in India. Now this topic is going to present, as I have mentioned, Honorable Kirti Vijaya madam. It's my pleasure to introduce that Kirti Vijaya madam. She is an assistant professor. At present, she is serving at Sreenidhi Institute of Science and Technology, Hyderabad, Telangana. So with this brief introduction, now I request you, madam, please start your presentation on the topic Canonization of Sexual Offence against Women in India. You are most welcome. Thank you, sir. Thanks for giving me this opportunity. And I would like to thank all the participants as well to be here, taking your time. Before jumping on straight to the topic, I would like to ask one question from all of you. Do you think that after having an facility like Me Too and many other facility also, do you think that all the crimes or offences against women are being reported? No, madam. No. Can respond? No. Okay. So, yeah, sadly the answer is no. And the reason is canonization again. So, I would like to clarify what I mean by this word canonization over here. The thing is, all these crimes against women, we tend to put them in a canon, okay? Canon as in a list, different list, okay? So we categorize it according to the severity of it, according to our understanding, okay? Let's say, for example, if someone is being eve-teased, okay, or if someone is being catcalled on the road, we say, oh, it's a small thing, you can just move on, or you can just change your lane from where you are crossing by, or the place you are visiting, or anything else, or why don't you take a self-defense training, or such kind of advices is something which is very general, okay? But if someone is being acid attacked on the road, then we are serious about it. Then we say, oh, it is a severe crime or heinous crime against the particular victim. So this is the high time to understand that things are not going to change overnight, okay? Any heinous crime doesn't happen overnight. It takes time. It finds its root and then it grows. That is something I would like to talk about. And this is the issue we don't address. And that is the reason I feel, the capital punishment is something which is not going to help our country. And anyway, we will discuss more about it in my presentation later. So this is what I mean by canonization of sexual offense or sexual violence against women in our country. Now, there are a few reasons behind this canonization, and I would like to discuss that. So the first reason is
objectification of women. Okay, so women are being objectified from many years or decades, I would say, in our country. Let's say, for example, in our lot of times women are compared to some objects, or they are themselves objectified, and even the things related to them are objectified or being treated as a taboo. Okay, I'll give you a very simple example from our film industry. Okay, there is a very famous movie called Pushpa from Telugu film industry, and it's a very famous movie starring a very big shot actor in it. And there is this scene in the film in which the protagonist, the hero, says that if you allow me to kiss you, then I'm going to give you further enough. So, in a very normal way, this exchange of having physical pleasures in return of money is being shown, and and the sad part is all the youth of this state, or I would say the entire country, is watching that, and a lot of boys really admire that particular actor who's there in it, and they try to act or behave in the same way or be the one. Okay, that's the saddest part of the entire thing. I'll give you another example from our music industry. We have a very famous song from this movie, again, which is a very famous movie called The Bunk 2. And there is this song, Fabi Call Say. This song has a line which says that, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले alcohol से. Okay. So it very clearly suggests that women are, object which is equivalent to a food item, and it is something which men need after being drunk, or which men can consume after consuming alcohol. Okay, and what we do as a society is we make it a party anthem, which is something very, very, very disgusting, I would say. And one day if something happens, or one day if women are actually being treated that way, then we go for a candle march or we take the concern. So this is a high time for us to. मैडम, आप हिंदी भी थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं सपोर्टिव. आप हिंदी भी थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं सपोर्टिव. Oh, okay, sure. So, this is a high time to understand that things are not. Yeah. Sir, Yeah. Just आचार्य साहेब. हो सर. होतोय का ब्रेक का नाही? मला ब्रेक व्हायचं का? काही तर नेट प्रॉब्लेम. देयर इज नेट प्रॉब्लेम. साउंड इज युअर ब्रेकिंग. But let us start now, because what happens if you check it, it will lose the time. Okay, you can continue, madam. Afterwards, it will be all okay. Okay. Yeah. So this is the first reason I would say, objectification, कि हम हमारी सोसाइटी में औरतों को एक चीज के समान बहुत समय से ट्रीट किया जा रहा है, किसी वस्तु के समान, I would say. ठीक है. And even things really, very, sometimes they are criticized for putting on makeup. कि अगर किसी ने बहुत भड़कीला मेकअप लगा रखा है तो that is an invitation for sexual violence. अगर लड़कियां या औरतें बाहर जाकर चाउमीन खाती हैं, this was also a statement, तो फिर वो भी एक तरह से invitation माना जाता है that they should not, wander like this, or eating here and there noodles like this. I have heard these things, and these things are prevails in our society. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम एक ऑब्जेक्ट की तरह औरतों को देखते हैं, बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने के बजाय. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, द रीजन व्हिच आई इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ टीजिंग एंड कैट कॉलिंग. ओके, अगर हिंदी में मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो सड़कों पर जब भी वल्गर कमेंट्स और या सीटी मारने की प्रैक्टिस या इन
Punjab, you have very regular practice called गेड़ियां मारना, ठीक है, बाइक पर लड़कियों का पीछा करना या जीप में, और इसको बहुत मास्टरिज्म के वे में लिया जाता है. इट शोज दैट द पर्सन हु इज डूइंग इट इज अ वेरी मस्कुलिन पर्सनालिटी, एंड इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है सैडली. एंड ये बहुत नॉर्मल हो गया है. इवन द इंटायर सोसाइटी इज कन्विंस्ड दैट ओ दिस इज नॉर्मल एंड गर्ल्स शुड have some precautions against it. For example, they should come back at home on time. उनको घर समय पर आना चाहिए, या फिर उनको certain kind of way में ड्रेस अप होना चाहिए, या फिर शाम को बाहर नहीं जाना चाहिए, या इस सड़क में अगर ऐसा होता है तो उस सड़क से नहीं गुजरना चाहिए. तो those kind of things. And the sad part is this is so much rooted in our society that our culture, in our culture, that we don't keep a check on it, or we don't even consider it as a crime or as something which is violating an individual existence. Okay, जो एक इंसान के पूरे अस्तित्व पे मैं कहना चाहूंगी कि हानि करता है, एक तरह से उनके अस्तित्व पे सवाल उठाता है या किसी तरह से उसको क्षति पहुंचाता है. And the next reason what I would like to address over here is lack of sexual education in India, lack of sexual education and understanding of consent. Okay, now this consent is a term which is very complicated. Okay, sometimes even your wife can say no, sometimes even your girlfriend or your whosoever your partner is can say no if that they are not feeling the same way, or if they are not keeping up health wise or something. Okay, and there is absolutely illiteracy when we talk about consent in our country, when it's about sexual exchange. So the problem is कि हमेशा से ये ऐसे पोर्ट्रे हुआ है कि दिस इज द ड्यूटी और ऑफ फीमेल ऑफ गिविंग द फिजिकल प्लेजर्स टू मेन, and they are this is their primary job if you are someone's wife or if you are someone's girlfriend or partner. Okay, and that is the reason, or that is the result of it results into what we say as a marital rape or date rape. That if someone is ready to go out, if a girl is ready to go out with a guy, he just assumes that she's ready for everything, right? There is no no procedure or nothing they have to follow, or that sort of thing. So there is absolutely lack of understanding of consent when the person is saying yes or when the person is saying no, and it shows into a very nice research paper written by Madhumita Pandey, who interviewed 122 rape convicts in Tihar jail, and she wrote a paper, and she says that when she was interviewing these people, and when she asked them that didn't you realize that what you are doing is wrong, and the other person is not enjoying it at all and doesn't want it, they don't. She found out they have absolutely no understanding of consent. Okay, they say that what is consent? I wanted to do it, so I did it. So that is the mindset they have, and this is also because of lack of sex education. Okay, in our male population, or in India, there is and this lack of sex education not only leads to crime against women, this also leads to crime against children, right? That's why we have something a problem called child sex abuse, because children are not being aware about which is a good touch, which is a bad touch, what is something which is they need to report to someone who's elder to them, and protect themselves, how to protect themselves when they are vulnerable. And one day when they grow up, they find out that they were molested when they were children. Okay, so this is another reason behind canonization, I would say, or lack of awareness. And then another reason what I have here is cultural archetype. Okay, so cultural archetype is something, cultural archetype about women is something, what I mean is, in simple words, stereotyping the woman. Okay,
means we have generally as a society we have very unrealistic expectations from women, and there is this constant comparison of women with our goddess. मतलब हम बहुत अविश्वसनीय तरीके की उम्मीदें लगा के बैठते हैं हमारी महिलाओं से. फॉर एग्जाम्पल एज इफ दे आर रियली अ गॉडेस. ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल कि अगर आप एक औरत हो तो आपको घर का भी ध्यान रखना है, और आप अगर करियर ओरिएंटेड हो तो हाँ आपको एम्बिशियस भी होना है. यू शुड अर्न ऑल्सो दीज डेज. फिर अगर इफ यू आर सॉफ्ट एंड काइंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एट टाइम्स. सो इट्स लाइक looking forward for unrealistic kind of balance. And when it comes to men, we are convinced that okay, they can't do it all. Certain kind of things, for example, household chores, they can't do, or they are not good at it. Whereas if you see, and a very small thing, cooking, right? We always say no, मर्द है कहाँ से खाना बनाएगा, उनको नहीं आता, उन्होंने नहीं किया या कुछ भी, right? But अगर आप बड़े hotels में देखोगे, so men are the only chefs, right? Not a female, not a women, and women are not subjected to be in the kitchen. But we are. This is a practice which is running through from ages or from decades again. I would say कि नहीं, औरत है तो इनको ये करना है, मर्द है तो इनको ये करना है. तो हमने रोल्स भी डिवाइड कर दिए हैं, जबकि ऑन लार्जर स्केल इफ यू सी ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर घर एक आदमी है, एक औरत है, घर उन दोनों का है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है. वाई डू वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ओनली वन पर्सन, राइट? We can and why do we expect that female should do this single-handed, right? It's highly unfair and unrealistic. Okay, yeah, this is the and this gives rise to the problem of this male ego, right? And lot of sex offenders, if you read the research paper, you will find out they have a certain kind of male ego that I am men, I have power, I can do this, this is my responsibility to keep women into her place, to make her understand that she should behave in a certain way or so. Okay, so that is something which we should be looking at, or we should be tackling, I would say. Then so these are the prominent 4 reasons I have found out that play a vital role when it comes to these kind of problems in our society. And yeah, then the next thing I would like to talk about this cultural archetype also doesn't allow women to express themselves or to for their self-love. And that is the reason the women who are bold and who are very expressive or who stand for their choices, we treat them or we make them look like a vamp. And that is something which is portrayed in our films and in our serials also from decades. So again, the connection between a concept of society and culture and its depiction through a mode of entertainment. Okay, and I would say that even before the social media, cinema had a very huge impact on our society, because as a student of literature, we are always told that culture and literature is not separate. Right? Whatever happens in society, it is depicted in the literature, and whatever depicted in the literature, it cannot be completely wrong. Okay, that's why if you will go through the British literature or American literature, and if you follow the correct timeline, you will find out the eras, the way they were divided: the Renaissance, the Victorian era, or the literature of World War II. Especially the American literature, you can very very clearly see the effect over there, and you can almost visualize the effects of those eras in that. You can just transfer yourself from here to there. Okay, just by going through that artistic masterpiece of literature, I would say.
And now the next point which I would love to tell you is, all these reasons behind the canonization give rise to certain kind of offenders. Okay, let's say for example, the normalization of eve teasing or catcalling, which is one of the reasons of canonization of sexual offense, give rise to opportunistic rapists. Okay, now what is opportunistic rapist? Let's say if there is a person who is following catcalling a girl from quite long time. If he finds an opportunity to, molest her or, harass her every way possible, or if he finds her alone someday, this is like 110% it's possible that he may attack her at that point of time, because that is something which is he's doing from quite some time, and he's quite habitual, and he is he doesn't have any fear. Okay, and he doesn't have any fear. We will discuss that also later. And another example I would like to give you is, for example, this reason cultural archetypes give rise to rapists who does the same for punishing women. Okay, again, in Madhumita Pandey's research paper, there is this rape convict who raped a 4-year-old girl, and when she asked him that why did you did such kind of thing with a child, he says that her character was not good. I was just trying to put her into place. She was not behaving properly, and even her mother character is not good. So I thought it is my responsibility to put her into a right place. Okay, but I realized that this was my mistake, or I have spoiled her life. So when I'll get out of the jail, I'll marry her. So this is another problem, and this is very similar to, there is this concept we call as a white man's burden. I'll tell you a bit about it. See, when Britishers colonized India, जब भारत colonized हुआ था, तो these people, these Britishers, what they used to say is कि हम आपको कल्चर सिखाएंगे, हम आपको सिविलाइजेशन देखेंगे, बिकॉज यू आर अ कंट्री विदाउट सिविलाइजेशन, आप लोग सिविलाइज नहीं है. एंड उन्होंने बीड़ा उठाया है पूरे ग्लोब को सिविलाइज करने का, ऐसा बोल के ही उन्होंने हमारे पूरे कंट्री को कॉलोनाइज किया था, ऑन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑन द नेम ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो, कि हम यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करेंगे एंड those kind of stuff. So this is something similar to the concept of white man's burden, that you are taking, effort to rectify things in the society, right? Without realizing that, without realizing that how much harm you are causing to someone, and what is the understanding of consent and their one's individuality and one's life. Okay, so this is the thing. And the another kind of rapist we discussed is the objectification. Sorry, not kind of rapist, the kind of reasons. Okay, so objectification of women give rise to rapists who are called as specialized rapists. Okay, that whenever they are trained almost, or they have the complete plan. They know how to do, what to do, and when to do, and they choose their victims and they attack accordingly, with a proper planning. Okay. And you will find a lot of such kind of cases actually in our society, in our own country, sadly. Now I would like to go ahead with the solutions, with what I could conclude that, okay, these can be the solutions. So the first one is some reforms in our legal system. For example, we don't have any serious punishment for catcalling or eve teasing, and that is the reason the people who do so, they are very easily being not being afraid of anything, because they know that these people who are going through it, they cannot report it. Even if they report it, there is no serious charges against it, and nobody will believe it, and sometimes it's hard to have evidence also against these kind of
crime. So legal reform is something which is really, really needed, and we need some serious punishment for it. Okay, instead of having the capital punishment for rapists, because even after the capital punishment, which happened in the Hyderabad rape case, we didn't find any change in our society. Cases are still coming, things are still going on, right? And another reform, what I see is educational reforms. Educational reform is something which is really needed in our society because from long time actually in India we had this the whole granth of sex education called Kama Sutra, and sadly we are not utilizing it now, but the other countries are utilizing it. Okay, to tell people that what is the importance or what is the process or which is the right age for it, right? And as a faculty, I meet a lot of youngsters on daily basis, and I see the mindset and complexity they have. And it is very important to tell them that yes, it is a part of life, but not at your age, right? You will have it, but when the right time comes, there is a time for everything. There is a process of everything to be in the society, to be human, I would say. So for that purpose, sex education is something which is very important, and again very recent. Recently, there is a very good movie, Oh My God 2 MG2 released of Akshay Kumar, which was talking about the same thing, right? That we need to have sex education to build up, to inculcate this understanding of this whole concept or this large picture in our children's brain, okay? To inculcate the knowledge and the right kind of knowledge, okay? Because what they do is, as a teenager, they Google things, they go watch stuff, and then, they want to experience it later. And that is something which leads to a problem. And we know that in Nirbhaya case also, there was one, underage, convict who was involved in it and who was one of the most brutal also. And so we cannot excuse these kind of, realities or facts which are coming upfront. Okay. Then next reform is overall reform on our cultural spectrum. Okay, what I mean is कि जो भी हम सोसाइटी में जिस तरह की मूवीज को, जिस तरह के म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो आजकल के रील्स और शॉर्ट्स हो यूट्यूब पे, और जिस तरह का कंटेंट यंगस्टर्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बहुत जरूरत है. नाउ बाय रिस्ट्रिक्शन आई डोंट मीन कि यू का सर्टिफिकेट लगा दिया, यूएनए का सर्टिफिकेट लगा दिया, एंड दैट्स ऑल. नो, नॉट दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. Actually, makers are someone who also needs to be serious about it, right? The kind of language people are using on the streets or in films, and that is something which needs to be checked on. That is something I feel that हमको बहुत जरूरत है अपने पूरे कल्चरल के को रिफॉर्म करने की. जब इन सब चीजों को कंट्रोल करने की बारी आती है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ 1000 सजेशंस लड़कियों को दें कि दे हैव टू go for a karate training to protect themselves, or they should dress up in such a way, or avoid wearing more makeup and all. क्योंकि ये सब डिफरेंट लेवल्स पे हमारे ही क्रिएट किया हुआ है, हमारे दिमाग में ही क्रिएट किया हुआ है. एंड we need to train our male children also at the same point of time, and when we are training our female children, okay, that you also needs to behave in such a way कि आपको भी समाज में एक तरीके से behave करने की जरूरत है. And instead of having this particular concept as a center of your life, it's very important for them to understand that it's a part of life, but it's not a center of their life. Okay, so it's very important कि हम हर एक छोटी प्रॉब्लम को सीरियसली लेना स्टार्ट करें, एंड हर एक छोटी चीज पर ध्यान देना स्टार्ट करें कि अगर कुछ
गलत हो रहा है हमारे सामने ऑन स्ट्रीट और इन आवर बिल्डिंग और इन आवर सोसाइटी और वेर एवर वी वर्क, we need to raise our voice against it. Okay. So this was the overall idea of my presentation or what I wanted to talk about. Now I would like to have some questions. If you have any questions or any queries, you can please let me know. We can discuss even more. Anyone, any questions or any point you would like to, give any more inputs into it? Thank you so much, madam, for the wonderful presentation. Now I request dear participants, if you have any query or would like to share, please come ahead. Dear participants. I mean, is I want to make a question. Sir, please. हेलो नमस्ते। Yes, sir, please. जय वीर सिंह sir. Yes. मेरा एक सवाल है कि आज भी सभी लिखे पढ़े हैं, महिलाएं लिखी पढ़ी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब कोई घटना घटती है उसको छुपाया जाता है, ऐसा क्यों? ये भी कहीं ना कहीं कैनोनाइजेशन की वजह से ही होता है सर, क्योंकि पहले तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है विक्टिम ब्लेमिंग, कि हम जो पीड़ित होता है, सॉरी जो पीड़िता होती है, उसको ही ज्यादा दोष दिया जाता है कि तुमने या तो ऐसे कपड़े पहने होंगे या तुमने किसी ना किसी तरह से कोई संकेत दिया होगा, इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर परिवार की बदनामी होगी, अपने छोटे भाई बहनों का सोचो। इन सब बातों की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज है जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। यू वोंट बिलीव, रिसेंटली, नॉट रिसेंटली बट एट वन ऑफ माय वर्क प्लेस जहाँ पे मैं काम करती हूँ एज ए फैकल्टी, ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट अपने फादर के साथ आई थी एंड वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी एंड वो कंप्लेन कर रही थी एक फैकल्टी के अगेंस्ट। दिस इज अनबिलीवेबल बट इट इज ट्रू कि उस फैकल्टी ने उस जो महिला छात्रा थी उससे मतलब कुछ आपत्तिजनक बातें की जो उस छात्रा को बिल्कुल सही नहीं लगी, और जब उसने आपत्ति जताई तो ये जो फैकल्टी थे इन्होंने उसको डराने की कोशिश की कि मैं तुमको फेल कर दूंगा या कुछ ऐसा करके। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्ची जो थी वो 3-4 दिनों तक कॉलेज नहीं आई एंड हमने पेरेंट टीचर मीटिंग रखी थी, तब वो अपने पिता के साथ कॉलेज आई और मैं उसकी क्लास कोऑर्डिनेटर थी। और उसके पिताजी ने मेरे से बात की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले तो मुझे काफी समय लगा, 1-1.5 घंटा उनके पिताजी को समझाने में कि डोंट वरी, आपकी बच्ची का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, सारे लोग ऐसे नहीं है एंड आई विल टेक दिस इशू, मैं इसको ऊपर तक ले जाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले। तो बच्चे क्या होता है सर कि डर जाते हैं एक्चुअली कंप्लेन करने से पहले कि उनको ही दोष दिया जाएगा या कोई और नुकसान होगा। तो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि यही ज्यादातर यही वजह होती है। जी मैडम, आपने सही कहा, लेकिन हम इससे ऐसे कैसे उभर सकते हैं, ऊपर कैसे आ सकते हैं, क्या करना चाहिए हम जैसे समाज के अंदर कैसे जागरूकता लाए कि परिवार से भी डरती हैं महिलाएं? क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप था महिलाएं भी थी उसमें, तो वो हिंदी भाषा साहित्यकारों का ग्रुप है। मैं साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ, वैसे उन्हें साहित्यकार कहना गलत रहेगा क्योंकि ऐसे साहित्यकार नहीं होते जो अपने को कहते हैं कि हम साहित्यकार हैं। तो एक साहित्यकार अपने को बड़ा विद्वान महिलाओं को कुछ आपत्तिजनक मैसेज लिख रहा है, तो मेरे तक वह बात पहुंची, तो मैंने उनको ढांढस बंधाया कि आप इससे डरिए मत, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर मतलब क्राइम, इस पे साइबर क्राइम के लिए भी सब कुछ बना हुआ है, और ये लिखित में कि अगर व्हाट्सएप पे कोई फोटो हो तो वो डिलीट हो जाए, लेकिन टेक्स्ट मैसेज डिलीट भी करेंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी।
तो लेकिन वे महिलाएं मतलब तैयार नहीं हुई, बोले नहीं घर वाले हमारा साथ नहीं देंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत हिम्मत से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, आप इसका विरोध करिए, मैं आपको बहुत अच्छे अधिकारी का नंबर देता हूँ, वो आपका जिक्र कहीं नहीं होने देंगे। लेकिन ये आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं परिवार भी इसमें दोषी ही है। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि कल्चरल आर्कटाइप जिस तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, लड़के या लड़कियों को, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है सर। कि हम लड़कियों को तो सिखाते हैं कि आपको ऐसा बिहेव करना है, इस तरह से रहना है, पर हम लड़कों को नहीं सिखाते कि उनको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है। और अभी भी भारत के बहुत सारे कस्बों में, बहुत सारे जिलों में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, उनकी डेवलपमेंट को लेके, उनकी प्रगति को लेके कुछ ज्यादा रुझान नहीं है। लोग समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है, और उनका पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, मतलब उनका भी आगे आके काम करना, ये जरूरी नहीं है। और इस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगी डिफरेंस साउथ और नॉर्थ के बीच में। ये प्रॉब्लम नॉर्थ में बहुत ज्यादा है सर, कि महिलाओं को जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ज्यादा। पर मैंने साउथ में, मैं बहुत टाइम से हूँ, बेसिकली मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, पर मैं पढ़ी और काम कर रही हूँ साउथ में बहुत समय से, अलग अलग जगह पर घूमी हूँ, काम किया है। मैंने बैंगलोर से पढ़ाई की, पहले मैंने वहाँ जॉब करनी स्टार्ट की, फिर मैंने विशाखापट्टनम में भी जॉब की है, एंड अभी मैं हैदराबाद में हूँ। मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि यहाँ पर महिलाओं का जो योगदान होता है हर तरीके के दफ्तर में, वो बहुत ज्यादा है, मतलब, और हर लेवल पर है, हर एक स्तर पर है, मतलब स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में भी है, फिर खेती बाड़ी में भी है, और मतलब तो ये एक बहुत अलग तरह का माहौल मैंने यहाँ पर अनुभव किया है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो जड़ है ना साउथ इंडियन में, उसमें बहुत ज्यादा ये योगदान देता है कि यहाँ की महिलाएं बहुत बोल्ड और बहुत एक्टिव और काम काज करने वाली, और समझदारी और अपने आप को लेकर जागरूकता उनमें बहुत ज्यादा है। हमारे तरफ ये चीज नहीं है। नॉर्थ में, नॉर्थ के कोर एरियाज अगर आप देखेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, उधर इतनी नहीं है जितना इधर है, जो मैंने अनुभव किया है। ये बिल्कुल सही कहा मैडम। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, बागपत मेरठ, तो सोनीपत एरिया है मेरा। तो वहाँ पर लड़कियों का एडमिशन तो रेगुलर रहते हैं। तो बेटकर सर, ये भी आपके लिए भी जानकारी है, लड़कियाँ कभी भी कॉलेज नहीं जाती। कन्या पाठशाला मेरे गांव के 8 तक है, 8 तक बच्चियां पढ़ेगी। उसके बाद मेरे गांव में कॉलेज है, तो 9th और 10th 11th 12th में लड़कियां का एडमिशन रहेगा रेगुलर, सिर्फ परीक्षाएं देने जाएंगे। और फिर बीए में भी अभी तक ये चल रहा है कि घर बैठे ही बीए करते हैं, रेगुलर ही एडमिशन रहते हैं। तो आज भी थोड़े इंग्लिश माध्यम जो स्कूल है उसमें बच्चों कुछ जाने लगी है, लेकिन मैं कहूँगा कि 10% ही जाती है। तो वो मैडम ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नॉर्थ से है, तो मैं भी नॉर्थ से हूँ, तो ये आज भी हमारी समस्या है, और इसीलिए ये समस्या हमारी बढ़ती भी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी और के पास मन में कोई सवाल हो, या और अगर डिस्कस करना चाहें तो। हेलो मैम। हेलो मैडम, आजकल हम देख रहे हैं, कॉलेज हो या स्कूल हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी गर्ल स्टूडेंट्स है या बॉयज स्टूडेंट्स है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होके कुछ अलग अलग क्राइम वो सामने आ रहे हैं। तो कई दिनों पहले ये चल रहा था कि शादी की उम्र कम होनी चाहिए, यानी लेडीज की फ्रॉम 18 to 16, और बच्चों की यानी 21 से 18 साल, ऐसा। इसके बारे में आपकी क्या राय है मैडम? और मुझे ऐसा लगता है कि जब सर्वे कॉलेज और स्कूल में जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यानी गर्ल्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के लिए, और बॉयज भी उतने रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि कुछ ऐसे लड़कियां भी हम जो कॉलेज पे आते हैं,
मस्ती करते हैं, चुप कॉलेज में ये नहीं करते, क्लास पढ़ाई नहीं करते, ऐसे कुछ हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेगी मैडम प्लीज? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि ये जो चीजें हैं कि किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ घूमना फिरना, किसी तरह के रिश्ते में होना, ये एक समय आने पर होने की चीज है, ये अभी आपके होने की चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन है नहीं। बचपन से जब वो स्कूल आते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि हाँ, गर्ल्स की लाइन अलग होगी, लड़कों बॉयज की लाइन अलग होगी, फिर अलग अलग बैठना है। और ये साइकोलॉजी है सर कि जिस चीज से अगर आपको मना किया जाएगा उस चीज को करने के प्रति एज अ चाइल्ड स्पेशली आपका रुझान और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्यूरियोसिटी हो जाती है और उनको एक्सपीरियंस करने की जो लालसा होती है वो और बढ़ जाती है उनकी। और मैं जैसा कि मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और जो लड़कियों और लड़कों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी रोजमर्रा ऐसी चीजें और ऐसे स्टूडेंट्स देखती हूँ। एंड मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनको मैं यही कहती हूँ कि तुम्हारी अभी ये उम्र नहीं करने की। ऑफकोर्स ये तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट होने वाला है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी इसमें टाइम आपका वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। तो खुल के बात करने और समझाने की बहुत जरूरत है सर। और द प्रॉब्लम इज कि खुल के कोई भी बात करता समझाता नहीं है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो गार्जियंस हो। जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं 10th बोर्ड में, जो बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है, वो खुद नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चे समझें। और नतीजा ये है कि हमारे समय में तो इंटरनेट ये सब इतना नहीं हुआ करता था, तो हमारी जनरेशन अब तक लगभग थोड़ी ठीक स्थिति में है मेरे अनुसार। पर लेकिन अब की जो जनरेशन है वो हर चीज का ज्ञान पाने के लिए चले जाते हैं गूगल महाराज पे, या फिर यूट्यूब है, या फिर और भी हजार चीजें हैं जो आपको और हमको भी नहीं पता है। और वो चीजों को सर्च करते हैं, आधी अधूरी जानकारी वहां से पाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, नॉलेज इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स, राइट? तो ये जो है वो रिजल्ट करता है इन तरह इन सब तरीकों के क्राइम में, जहां तक मेरा अनुभव या समझिए कि मेरी समझ या मेरा नॉलेज है, मुझे यही लगता है। और एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर दिया मैडम। और एक क्वेश्चन पूछा था शादी की उम्र के बारे में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे मैम? शादी की देखिए, सरकार की तरफ से तो एक उम्र जो है वो तो डिग्निफाइड है ही, पर अगर आप सब्जेक्टिव ओपिनियन की बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि दो चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। पहला, आपका करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप जो मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स को और बच्चों को या जो भी मेरे से छोटा है उसको मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले जरूरी है आपका अपने पैर पे खड़े होना, अपना करियर बनाना, अपने आप को स्टेबल करना, अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना इस समाज में। तभी आप दूसरे को जीवन में कुछ दे पाएंगे, क्योंकि हम एक दाम्पत्य जीवन में आते हैं किसी का साथ पाने के लिए, किसी का साथ देने के लिए। जब आप खुद के लिए खुद ही खड़े होने के लायक नहीं है तो आप किसी और को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? पहली तो ये चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, जब आपको फील हो कि आप अपने लाइफ में कंटेंट है, आपको जो मिनिमम एटलीस्ट जो जितना करना था उतना आपने किया है, आप संतुष्ट हैं और अपनी खुशी और अपना एक्सपीरियंस आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं या बाकी की जिंदगी किसी के साथ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, शादी आपको तब करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर कोई युवक है 35-36 साल का और करियर में लाइफ में भी कुछ हुआ नहीं है, तो लोग कहते हैं कि इसकी शादी करा दो। अब शादी तो लोग करा देते हैं, फिर होता क्या है कि वो युवक और उसकी जो पत्नी है वो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी रोजी रोटी जुटाने को या कुछ करने को। और मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, मैं बिहार से हूँ, मैंने बहुत देखा है ये कि स्ट्रगल करते हैं। और फिर क्या होता है कि एक रोटी के अभाव में, कहिए एक आम भाषा में, कि जो तनाव उत्पन्न होता है उनके बीच में,
उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जन्म लेता है वहां पर, मारपीट और हर तरह की वो चीज जो एक दाम्पत्य जीवन में नहीं होनी चाहिए ये होती है। और उसके बाद भी सजेशंस आते हैं कि बच्चे कर लो तो तुम्हारा जीवन और सही हो जाएगा, तो वो भी नहीं होता है। आप उल्टा और एक और जिंदगी को लाके उसकी भी लाइफ खराब कर दी जाती है, राइट। और इंडिया आप देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, हम अपने रिसोर्सेज से लॉजिकली स्पीकिंग के बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ खाने पीने की कमी है और जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, हमको बहुत जरूरत है ये समझने की कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो अभी भारत की जरूरत है और बनने वाला है। वो दिन दूर नहीं है कि हम भी चाइना की कंडीशन पर आ जाएंगे, ऑलरेडी नंबर 1 पर आ ही गए हैं। और रिसोर्सेज की जो कमी है वो बढ़ती जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है। थैंक यू मैडम। और ऐसा भी है कि मैडम अभी फिलहाल शादी की उम्र करंटली जो देखते हो आप 28 या 30 साल की उम्र में शादी बच्चों की यानी करते हैं। yes, तो ऐसा भी होता है 2 साल तक एम्प्लॉयमेंट की पढ़ाई में उनका वो पूरा जीवन जाता है जो भी यानी वो। और उसमें क्या होता है मैडम कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जहाँ पे इतनी सारी पढ़ाई करके भी हमें नौकरी नहीं मिलती, यानी बहुत सारा कंपटीशन हमारे सामने है, तो ये भी कहीं फील होता है। और हर तरफ हर बार वो नर्वस होते हैं और कुछ एक क्राइम के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी बहुत सारा हम देखते हैं मैडम, प्लीज इसके बारे में। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट होता है जब आप अपने बेसिक जो एकदम मुद्दे और की जो जरूरत होती है, एकदम बेसिक जो ग्रास रूट लेवल पे जो जरूरतें होती हैं वो अगर पूरी नहीं होती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र के बच्चे भाग कर शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनका उस समय कहना होता है कि भाई हम प्यार में हैं, पर लेकिन धीरे धीरे जब जो मौजूदा हालात है बिगड़ते जाते हैं, जब चीजों की कमी होती है तो फिर झगड़े स्टार्ट होते हैं और कुछ ना कुछ क्राइम होता है और प्यार तो देखते देखते खिड़की से हवा हो जाता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि इन सब कॉन्सेप्ट को खुल के बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि मतलब अगर कृष्ण भगवान ने भी प्रेम किया था तो उनको भी सही गलत की समझ थी, है ना। उन्होंने भी कभी मर्यादा को पार नहीं किया और उनका जो प्रेम करने का तरीका था या जो पूरा प्रेम प्रसंग है वो बहुत अलग था। प्रेम तो वो कृष्ण भी करते थे, क्योंकि बच्चे बहुत बार कहते हैं कि प्रेम तो राम भी ने भी किया था, प्रेम तो शिव भी करते थे पार्वती से। पर लेकिन इन सब में कॉमन बात यह है कि सबने कुछ ना कुछ त्याग भी किया है। तो अमृत बिना त्याग और बिना समर्पण के आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, पहले आपको हर चीज का कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, पहले आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, तभी आपको इन सब चीजों का आप जो एक दाम्पत्य जीवन का हम कहते हैं कि आनंद उठाना आप उठा सकते हैं। तो इन बातों को उनको खुलकर समझाना रिलीजन से लिंक करके या सोसाइटी से लिंक करके या हमारे कल्चर से लिंक करके बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत अच्छा मैडम। स्वानंद शुक्ला यस सर प्लीज। गुड इवनिंग मैडम, आई हैव वन क्वेश्चन। यस सर। अभी आपने कहा मैडम कि साउथ इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट आपको अच्छी तरह से दिखती है, जो नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखती है। नहीं दिखती है ऐसा मैंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन हाँ थोड़ी उधर कमी है। और हाँ जी, तो रीजनल इम्बैलेंस की वजह से है या किसी और वजह से ये इम्बैलेंस आपको दिखता है? रीजनल नहीं कहूंगी सर, कल्चरल कह सकती हूँ अप टू सम एक्सटेंट कि कुछ सिस्टम्स जो उधर है ना वो इधर बहुत अलग है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे तरफ डाउरी सिस्टम है, राइट, कि जब हम बेटियों की शादी करते हैं तो हम डाउरी देते हैं। पर इधर मैंने साउथ में क्या नोटिस किया है, तमिलनाडु में स्पेशली, कि
लड़कियों को डॉरी मिलती है एक्चुअली उनकी फैमिली से जब शादी होती है हमारे तरफ, पर इधर क्या है कि जो दामाद होता है उनको घर जवाई बना लिया जाता है इन अ वे, मतलब वो भी प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाते हैं। तो ये मुझे बहुत यूनिक लगा कि मतलब ये काफी अलग एक प्रैक्टिस है कि लड़की को बेटी को अलग नहीं किया जा रहा है, बजाय उसके भी जो पति हैं उनको भी फैमिली का प्रॉपरली पार्ट बनाया जा रहा है। एंड ये इस प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंस है और वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हमारे तरफ शादियों में है कि पूरा खर्चा जो है लड़की वाले उठाएंगे और ऐसा करके है, पर इधर में है कि दोनों परिवार खर्चा बांट लेते हैं और दहेज की तो कोई बात ही नहीं होती मोस्टली, एक्चुअली एटलीस्ट 2 स्टेट्स में मैंने ऐसा देखा है, एक तो तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नहीं कहूंगी, इधर दहेज की प्रैक्टिस थोड़ी अभी भी चलती है, पर कर्नाटका में मैंने ये चीज देखी है। और ये मुझे लगता है कि अलग है सर, और विमेन एजुकेशन को भी लेके ये लोग ज्यादा अवेयर हैं, मतलब यहाँ पढ़ती है इधर, और एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बहुत ज्यादा साउथ में। या एंड डर भी, मतलब सड़कों पे चलने में डर या कुछ भी डर ये भी कम है, और लोग रुक के भी मैंने देखा है कि मदद करते हैं। अगर कुछ भी सस्पिशियस थोड़ा देखा तो लोग रुकते हैं और पूछते हैं और मदद करते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे बड़ी बात सर, जब मैं नॉर्थ में थी, मैं अपने ग्रेजुएशन तक नॉर्थ में थी, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से की है। तब तक एक ईव टीजिंग जो होती है उसकी हमें भी आदत थी कि रोड पे चलेंगे तो कुछ बोलेगा ही, तो ऐसे करना है, वैसे चलना है, ऐसे रहना है। पर जब मैं साउथ में आई, जब मैंने कदम रखा था बैंगलोर में, वहां पर इस तरह की कोई चीज ही नहीं थी। वहां पे ईव टीजिंग थी नहीं। मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब लड़कियां अगर 12 बजे भी 1 बजे भी रोड पे चल रही हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है या किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और साउथ में कहीं भी मैंने ये चीज नहीं देखी है, छेड़खानी जिस तरह से नॉर्थ में होती है उस तरह से होते हुए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी कल्चरल डिफरेंसेस, जो बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट करती हैं सर। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। शुक्ला जी, शुक्ला जी। Shukla sir. Hello. Yeah. Good evening, Dr. Bedkar sir, Principal sir, Prashant sir. Good evening, ma'am. Wonderful presentation you have made today. I have to make a comment on 2 things. One, the question was the marriage. The age of marriage. That is one of the very crucial questions. I think Prashant sir has asked. I think it has some other meaning also. Like they should get capable financially and career-wise and everything. But I think apart from that, the physical and mental, their development has not taken place. And when the girl child, means we should call her girl only, and if she gets conceived very earlier, mind it will have a very long impact in her life. So that is why we are promoting, because she's not yet capable, physically, anatomy, physiology, they are not yet developed fully. That is one thing. As a doctor, medical point of view, I'm putting it. And another thing is mentally they are not matured. The relations when we are maintaining, it is not just 2 partners coming together. Even it is a legal contract marriage, but still, the mental maturity is one of the very important factor. What you said very correctly, and it leads to various kinds of things. What you have suggested. Another question was asked. That is about the this north and south. We are comparing two things. The basic thing is, the south is going very well with education. The literacy rate. If you find out the map of literacy of north and south, yes, definitely there is a difference. And we should not take it as a personal or religion or region wise, but I think we should take it as a, what level of education, what kind of literacy rate is there. And that determines the factors, what I feel. So these are the 2 points from my side. Otherwise, your presentation was very wonderful and very well explained, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. And I really, truly agree with you.
because it actually you are saying that whenever the girl child especially, or the male also, if they are not mature mentally, or they are not ready mentally, what happens is it will have effect on their life and the child's life also. For entire life, actually, that child will be disturbed because the couple doesn't know how to raise their child, right? And that is something which leads to serious problems actually in an individual's life. Yeah, very, very correctly said. The low birth weight and premature births and congenital Yes. anomalies and so Yes. many things can So develop from many. this. So the maturity is one of the very important thing, mental, physical. Yes, ma'am. Yeah. Thank you. सूर्य व्यास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था। मेरा ये मानना है कि आप मतलब कितने भी शिक्षित हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं, आपका जो सामाजिक और पारिवारिक संस्कार क्या है, ये जो है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके बारे में आपके क्या विचार? क्योंकि पढ़े लिखों ने भी ऐसी ऐसी बातें की है जो आप देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसी बातें भी होती है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ बिल्कुल, आई एग्री विथ यू सर। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते तो हमारे सामने मैरिटल रेप और डेट रेप के केसेस नहीं आते, क्योंकि ये जो डेटिंग ये सब का कॉन्सेप्ट है आजकल, इन सब चीजों के लिए भी एप्लीकेशन है लड़के लड़कों के मिलने के लिए, सॉरी लड़के लड़कियों के मिलने के लिए एंड ऑल। तो पढ़े लिखे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं या ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो हाँ उनका एक बेसिक जो संस्कार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का ही ऑन जिसको हम कहते हैं कि दिमाग से 3 हिस्से होते हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, कि इड होता है हमारे ब्रेन में जो हमको गलत चीजों के लिए भी इनकरेज करता है, एंड वो उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, और ये मैं बहुत लेमैन साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक होता है सुपर ईगो, जो हमारे ब्रेन में डेवलप होता है हमारे को जो एजुकेशन मिलती है, स्पेशली अपनी फैमिली से, जो हमारी धरोहर होती है, जो हमारे बेसिक वैल्यूज होते हैं, उससे हमारे ब्रेन में सुपर ईगो जो होता है वो डेवलप होता है। और वही होता है जो थर्ड पार्ट जो होता है ईगो और इड के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है और हमको सही गलत की समझ देता है। तो बहुत बार जो ये है फैमिली वैल्यूज जो है वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी इंडिविजुअल को ये सिखाने में कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या उनकी बाउंड्रीज है। तो हाँ, आसपास का माहौल और परिवार जो सिखाता है वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैंने कल्चरल आर्काइव की बात बोली थी कि घर की जिम्मेदारियां या हम किस तरह से बड़ा करते हैं वो सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों की भी बहुत हद तक वो जिम्मेदारी है। अगर आप एक लड़के के पिता हैं तो आपका भी बहुत काम है ये चीज उसको बैठाना और सिखाना कि हाँ तुम्हारी क्या हदें हैं, तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और तुमको समाज में किस तरह से रहना है, राइट? एज अ मदर और एज अ फादर यू हैव टू एजुकेट योर सन ऑल्सो फॉर दिस। धन्यवाद मैडम। इसमें एक बात और है मैडम, आजकल है ना जो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन बच्चों को संस्कार और वो सब चीजें जो है लगभग आजकल जो है स्कूलों में थोड़ा कम हो गया है मैडम। हाँ बिल्कुल सही बात है, और फीस भी बढ़ गई है, और 10 तरह की दूसरी एक्टिविटीज की डांस क्लब है, तो ये है तो वो है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बेसिक जो एक ह्यूमन वैल्यूज होती है ना सर, उसकी बहुत कमी हो गई है। जो फैकल्टीज को एग्जैक्टली मतलब हर दिन थोड़ा टाइम इस चीज को देना चाहिए कि हर चीज का सही गलत इफेक्ट आप समझाएं और सिखाएं। बहुत फैकल्टीज होते हैं, अब अगर आप साइंस के फैकल्टी हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री फिजिक्स ये के, तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया पर आपने उसको रियल लाइफ से अगर लिंक नहीं किया ना, तो बच्चे रट्टू तोता हो जाते हैं। उनको उसको कॉन्सेप्ट का यूज पता ही नहीं है प्रैक्टिकल, राइट? जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं जो शिक्षक हैं या जो घर पे माँ बाप है, उनको बहुत जरूरी है कि वो ये सब शिक्षा दें। वो एक मोरल वैल्यूज और एक ह्यूमन होने की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसकी थोड़ी शिक्षा उनको घर पर देनी या स्कूल में देनी बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ उनको डांस और म्यूजिक और ये वो सिखाना। वो तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट होगा वो डेवलप हो ही जाएगा, वो आ ही जाएगा। एक अच्छा इंसान बनना पहले ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ बीइंग
anything better or good version. Thank you, So, madam. thank you, sir. Honorable Jaivir Singh, sir, Surya Vyas, sir, Swanan Shukla, sir. And Thank you. others for the nice queries. Now I request the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bedkar, sir. Sir, please come ahead and have concluding words for the session. Please welcome. Thank you, Prashant sir. Today's resource person डॉक्टर कीर्ति सिंह मैडम, आज के सभी सहभागी जो हमारे महाविद्यालय से है, डॉक्टर किरण चौधरी सर है, काले सर है, प्रवीण जी उडगे सर है, और आज के उपस्थित सहभागियों में से डॉक्टर स्वानंद शुक्ला जी, जयवीर सिंह जी, और जो क्वेश्चन पूछे सूर्या व्यास जी और सभी पार्टिसिपेंट्स। ये वेबिनार सीरीज में वुमेन एम्पावरमेंट सीरीज इसका थीम है। इसके सीरीज के तहत आज का जो वेबिनार हुआ, वो वेबिनार महिलाओं की समस्या के बारे में जिक्र करता था। जो टॉपिक मैडम ने चूज किया है, वो टॉपिक सभी महिलाओं के एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें, गलत हरकतें लोगों से देखी है या सुनी है। ऐसे वक्त में हमें लड़कियों को क्या करना चाहिए, संस्कृति का कैसा इफ़ेक्ट होता है, कल्चर का कैसे इफ़ेक्ट होता है, एजुकेशन में आने के बाद क्या बच्चे सोचते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एज ए टीचर हाउ शी हैव सॉल्व्ड। सो इन सब बातों का चर्चा हुआ, जिक्र हुआ, और उन्होंने प्रयास भी किया है कि ऐसे कुछ लड़कियों से हो रहा है तो उन्होंने एक लड़की का एडमिशन का भी एडमिशन के बारे में उन्होंने खुद आगे चल के उनको हेल्प की वाली है। तो सूर्या व्यास जी जैसे कह रहे थे, घर से ही उनको सभी संस्कार मिलना चाहिए। ये सही है कि अपने बच्चों की पढ़ाई होते समय अदर कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ, जैसे मैडम ने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी उनको सिखानी चाहिए जो कि समाज हित के लिए काम में आए। जहाँ भी चर्चा हो, ऐसे समाज हित की चर्चा की जो अनुषंग होती है, वहाँ हमारे बच्चों का, हमारे साथ का सहभाग होना ज़रूरत है। वो भले कोई भी समस्या हो, जैसे सामाजिक समस्या की कोई चर्चा चल रही है, कोई ऐसे थीम हो रहे, तो उनमें से अगर अपने साथ अपने बच्चे रहे तो वो कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। कभी कभी परिस्थिति का गांभीर्य देख के भी उनसे प्रभावित हो जाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 4 दिन की पहले नासिक से मुझे 8 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। ऐसे ही एक लड़की से छेड़छाड़ हो गई, एक किराना दुकान चलाती थी और उसका कुछ दोष नहीं था। जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में लिया, मारते मारते वो लड़का मर गया। तो पूरी गांव को जलाने की कोशिश उन लोगों ने की वाली थी। तो गलती उस लड़की की कुछ नहीं थी। तो ऐसे जो केसेस रहते हैं वो केसेस नहीं होने चाहिए। जो युवा वर्ग है उन्होंने सोचना चाहिए पहले अपना करियर हो, फिर बाद में ये सब कुछ हो। तो ये आज का वेबिनार महिला एम्पावरमेंट के बारे में रहा। धन्यवाद मैडम, आपको भी भविष्य में इस ऐसे संबंधित विषय में आपसे निमंत्रित करेंगे। सभी सहभागियों का नम्रतापूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्लीज वेट फॉर vote of thanks. Thank you, sir. Now I move towards the vote of thanks. Shri Kumarswami Mahavidyalaya, Ausa, District Latur. We know organized several record series too. Today there was 265th day of the series, and the resource person for today's session was on dais Honorable Kirti Vijaya Madam, who talked upon the topic that is canonization of sexual offence against women in India, where ma'am have covered all those aspects regarding the different crimes and giving the different examples against the sexual offences. So the topic was very informative to
everyone's life, because nowadays we are seeing that many crimes are coming forward. How to prevent it? Today there is Indian Constitution Day, which is also known to be a National Law Day. On this eve, and today there was a topic regarding the crime, regarding the law. So, madam, you have presented very nicely in a simple language. So, I'm very thankful to you on behalf of the organizing committee members. I thank the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Ambedkar sir, colleagues from my college, Dr. Praveen Kamble sir, Dr. Prakash Karat sir, Dr. Kiran Chaudhary sir, Honorable Praveen Vijaya sir, and all others. Heartily thanks Jaivir Singh sir, Surya Vyas sir, Dr. Swanand Shukla sir, and others sirs. Those who have asked nice queries also shared some views. So thank you so much to you, and heartily thanks all those dear participants. Now I request to you, please fill the feedback link which is given in the chat box. With the kind permission of the chief organizer, I declare today's session is over. Once again, thanks to you, madam, for being with us, paying your valuable time, accepted our invitations. So thank you so much. Thank you so much, sir. I'm glad I got this opportunity. Thank you, madam.